Okay, let's start the lecture. So today we discuss convergence in matrix space. Then we discuss the limit, the relationship between the limit and limit point. So given a matrix space XT, it's not one minute. There is some problem. Okay, I have to use the pen. Okay, what happened with this? This is one minute. Okay, so given a matrix space XD, let XD be a matrix space. Let XT be a matrix space. We already discussed it. Let XT be a matrix space with matrix B, and if we have a sequence xn B, a sequence in X, we say that this xn is a convergent sequence. If there exists some point, okay, if there exists x, say in X, such that आपको आवाज आ रही सबको है? Are you getting this? Yes, sir. So there is X belongs to X such that for all epsilon positive, there exists some natural number n. There exists say n greater or equal to 1, such that distance between x and x is less than epsilon for all n greater or equal to n, or equivalently we can write it as, or equivalently this x n, it belongs to the sphere, okay, as epsilon x for all n greater or equal to n. So that's the definition, okay. And we know that we have already discussed it, that the limit of the sequence is always unique, and we denote so its limit is x, then x is always unique, then we write it as the limit of x n is equal to x, okay. So that's the notation for this limit, or we can also write it as x n approaches to x, or we can write it also as distance between x and x, it approaches to 0, okay. So basically this as n approaches to infinity, here as n approaches to infinity. So that's the definition of a limit of a sequence. So this limit of a sequence, it cannot be the limit point, because sequence is, it's not a set, it's actually a function. फंक्शन का लिमिट होता है, उसका लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट किसी सेट का एक्चुअली होता है. तो जब भी हम सीक्वेंस की बात करेंगे ना, सो इट्स एक्चुअली a function. So whenever we talk about function cannot have a limit, but it has a limit अगर वो exist होगा. So
No, but we have, so therefore sequence cannot have a limit, it has a limit point, and the set cannot have limit. सेट जो होता है ना उसका लिमिट नहीं होता, उसका लिमिट पॉइंट होता है. सो बट वी हैव फॉलोइंग थ्योरम व्हिच कनेक्ट्स दीज टू, लिमिट पॉइंट एंड लिमिट. सो दिस इज द थ्योरम. It states that if a convergent sequence in a metric space, if a convergent sequence in a metric space XD has infinitely many distinct points. So अगर आपके पास कोई sequence होगी, if a convergent sequence say xn, okay, let's write here xn. If a convergent sequence xn in a metric space xt has infinitely many distinct points. So what does it mean? It means that so we have a sequence. This sequence has infinitely many distinct points. Like we have the sequence 1 by n, which is consisting of the points 1, 1 by 2, 1 by 3, and so on and so forth. They are all distinct. But we have sequences like minus 1 power n, and this sequence has only 2 points, distinct points, 1 and minus 1. So it starts with minus 1, then plus 1, then again minus 1, then plus 1. So the set of the points of this sequence is finite. It's not infinite. So this here the statement is the sequence is convergent and it has infinitely many distinct points. So it's not like minus 1 power n. Okay, it's like this 1 by n, which has infinitely many distinct points. Then its limit, तब उस केस में अगर sequence इस टाइप की होगी तो इसका लिमिट क्या होगा? Then its limit, इसका जो लिमिट होगा, obviously वो लिमिट पॉइंट इसका तो नहीं होगा sequence का, बट वो क्या होगा, वो किसका लिमिट पॉइंट होगा वो बताने जा रहे हैं. But its limit is a limit point. Is a limit point of set of points of set का होगा ना, of set of points of the sequence x. तो ये sequence ये सेट नहीं है, बट इसके जो पॉइंट्स है उनका हम सेट बनाएंगे. ओब्वियसली उस सेट का या तो लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. मगर अगर ये सीक्वेंस क्या होगी, अगर इस सीक्वेंस के पास इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे और ये कन्वर्ज करे किसी पॉइंट x पर, तब वो जो पॉइंट x होगा वो उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा. कौन सा सेट? जो आपने इस सीक्वेंस से लिया है. तब सीक्वेंस के आपने पॉइंट्स लिए हैं एक एक करके, उनका आपने सेट बनाया. सो ओब्वियसली सेट में जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ही होती है. तो वो जो सेट होगा वो इन्फिनाइट सेट होगा. प्रूफ. तो जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास अगर सीक्वेंस होगी से माइनस 1 पावर है, इस टाइप की सीक्वेंस अगर आपके पास होगी ना, ये सीक्वेंस है, इसमें पॉइंट्स क्या है सीक्वेंस? माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1. इट्स नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. और अगर आप लोगे इसके जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगी, वो सेट क्या होगा? वो सेट ये होगा माइनस 1 एंड 1. इसमें 2 ही पॉइंट्स होंगे एज अ सेट, इसमें 2 ही पॉइंट्स होंगे. तो ये जो सीक्वेंस है इसमें इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है. या मैं ऑब्वियसली ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं. अब मैं नेक्स्ट में ऐसे एग्जांपल लूंगा जो कन्वर्ज होगी और जिसके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं होगी. से लेट्स टेक दिस सीक्वेंस, लेट्स टेक दिस सीक्वेंस. सीक्वेंस के पॉइंट्स इस टाइप के होगी. से लेट्स टेक दिस 1 पावर n. ये सीक्वेंस आप लीजिए. ओके, 1 पावर n. इस सीक्वेंस के जो पॉइंट्स है ना, इस सीक्वेंस के जो ये टर्म्स है वो ये है 1 1 1 1. और अगर आप इन पॉइंट्स का सेट बनाओगे वो सिंगलटन सेट होगा.
क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है। तो ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेस टू वन इसका लिमिट है, बट वन इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस बिकॉज दिस सेट इज फाइनाइट, सो फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट। तो ये मैंने एक्सरसाइज भी रखी है, उसमें अगर आप वो देखोगे, अगर 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 आपके पास कोई सेट है और एल इसका लिमिट पॉइंट है, एल तभी इसका लिमिट पॉइंट है अगर एल का हर कोई नेबरहुड ए के इन्फिनिटी मनी पॉइंट्स को कंटेन करे, ए के। तो अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा तो पहले वो सेट जरूरी इन्फिनाइट सेट होना चाहिए, तब जाके उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो जो सेट फाइनाइट होगा उसके लिमिट पॉइंट, उसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, उसका डिराइव्ड सेट एम्प्टी सेट होता है। तो इसका इस सीक्वेंस का लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है, वन इसका लिमिट है, बट जो इसके सेट ऑफ पॉइंट्स है वो जो लिमिट है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। मगर जो ये थ्योरम है ये गारंटी ये दे रही है कि अगर ये सीक्वेंस ऐसी होगी, ये कन्वर्ज भी होगी और इसके पास इन्फिनिटिवली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, then that limit is the limit point of the set of the points। तो उसकी एग्जांपल भी अगर आप देखोगे, लाइक वी हैव अ सीक्वेंस 1/n, तो इसकी जो टर्म्स है वो है 1, 1/2, 1/3 है ना, ये इसकी इन्फिनाइट टर्म्स है, इन्फिनिटिवली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इस सीक्वेंस के, और इसका जो लिमिट है वो 0 है, और 0 लिमिट पॉइंट है इस सेट का भी। जब इसका आप सेट, जब इसको एज अ सेट आप ट्रीट करोगे ना, इसके सेट पॉइंट्स लोगे 1/2, 1/3, तो वो जो 0 है ना, 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 सीक्वेंस का लिमिट भी है, और इस सेट का विच इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ये 0 इसका लिमिट पॉइंट भी है। तो इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं, इसी थ्योरम को। so let's take this sequence, let xn be a sequence having infinitely many distinct points, and assume and say x and it converges to x। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना x is the limit point of the set of the points of this sequence। we show that x is a limit point of the set of points of the given sequence, of the sequence xn। okay, ये हमें प्रूव करना है। so we assume on contrary that x is not the limit point, assume on contrary that x is not the limit point of the set, वही सेट जो आपने लिया है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। हाँ, कोई बताए, अगर x लिमिट पॉइंट होता है इसका तो डेफिनेशन क्या है लिमिट पॉइंट की? Yes, anybody? Yes, rule number 8। सर अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है सेट का, तो इसकी नेबरहुड मतलब x की नेबरहुड में इंटरसेक्शन विद सेट वो एम्प्टी होगा। ओके, x का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट होगा जिसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ एम्प्टी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा नेबरहुड से, ठीक है। तो कोई नेबरहुड एग्जिस्ट होगा जो उसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस सेट के साथ जो आपने सेट लिया है। सो देन देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर। यहाँ पर हम स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, नेबरहुड्स की नहीं। देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर विथ सम रेडियस r and centered at x such that this does not contain any point of the sequence। ओके, ये सीक्वेंस का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। such that
SRX does not contain any point of the sequence xn. Obviously other than x, अगर x उसका point होगा, does not contain any point of this sequence. Okay, but it's given that this this sequence x and it converges to x. So what's the definition of convergence? Convergence की definition क्या है? In terms of open sphere, what's the definition of convergence? अगर मैं first slide पर आ जाऊँ, let's see this this one. तो जब मैंने कहा कि कन्वर्ज हो रही है, तो मैंने ये कहा कि कोई भी स्फीयर अगर आप लोगे जिसका सेंटर एक्स होगा, तो कोई नेचुरल नंबर n x होगा such that that sphere contains the points of this sphere x and belongs to the sphere for all n greater or equal to n. अगर ये x इस sphere का लिमिट होगा, तो यहाँ पर तो x इसका लिमिट है ना, x is the limit of this sphere, so we can apply the definition here, but x n converges to x, so there exists some n such that x n belongs to S epsilon x for all n greater or equal to n. देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, इससे जो प्रीवियस पेज पर अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर ये कह रहा है कि S epsilon x does not contain any point of the sequence, और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि it contains all these points for n greater or equal to n. तो इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हो गए ना n greater or equal to n, ये सारे फिर x के बराबर होने, क्योंकि इसमें तो सिर्फ x है ना, इस स्फीयर में अगर x इस स्फीयर का पॉइंट होगा तो इसमें सिर्फ पॉसिबल तो इसमें सिर्फ x हो सकता है. तो यहाँ पर मुझे लग रहा मेंशन करना पड़ेगा दिस here I should mention it, does not contain any point of the sequence other than x. Okay, other than x, should mention it here, other than x. So then I can conclude that this implies x n must be equal to x for all n greater or equal to n. क्योंकि इस स्फीयर में सीक्वेंस का कोई पॉइंट नहीं है x को छोड़कर, मगर यहाँ से कन्वर्ज, क्योंकि जब आप लिमिट की बात करें वहाँ से ये कह रहा है कि इस स्फीयर में सीक्वेंस का हर कोई पॉइंट है अनवर्ड्स दिस n कैपिटल N. तो इसका मतलब वो जो सारे पॉइंट्स होंगे वो जरूरी x के बराबर ही होगी, क्योंकि x को छोड़कर तो कोई पॉइंट है ही नहीं इस सीक्वेंस का इसमें. सो विच मीन्स दैट दिस, ये जो सीक्वेंस गिवन आपके पास है, इट हैज ओनली फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि x n ऑनवर्ड जो भी पॉइंट्स है वो तो सिर्फ x के बराबर ही है. तो इससे पहले कितने पॉइंट्स, इससे पहले x1 x2 अप टू x कैपिटल N माइनस 1, और इसके आगे जो भी पॉइंट्स है वो सारे x के बराबर है. सो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस x हैज ओनली फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हैज ओनली finitely many distinct points, which is a contradiction, क्योंकि हमने already assume किया है कि it has infinitely many distinct points. A contradiction is required. Okay, so this is the first theorem. तो जो हमने इससे पहले जो लेक्चर किया उसमें हमने कंप्लीटनेस को डिस्कस किया, कॉची सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया. हमने बताया कि a space is complete if every Cauchy sequence is convergent. So next we try to find which subsets of a metric space are complete. तो जैसे वहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, वहाँ पर हमने बताया कि R तो है ही कंप्लीट है ना,
फिर हमने ये एग्जांपल दी थी 0 1 इंटरवल जो है दिस वन, दिस इज नॉट कंप्लीट। फिर आप में से किसी ने कहा कि अगर हम 0 को इंक्लूड करेंगे क्या ये कंप्लीट होगा, तो वहाँ पर तो ये कंप्लीट होगा बिकॉज ज़ीरो को हमने इंक्लूड किया, 0 पर ही प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ से हमने एक ऐसी सीक्वेंस ली थी जो कि 0 पर कन्वर्ज कर रही थी और 0 इसका पॉइंट नहीं था। तो जब हमने 0 को इंक्लूड किया तो फिर जो भी कोशिश सीक्वेंस आप इसमें लोगे वो कन्वर्ज करिए। तो रीज़न ये है एक्चुअली दिस इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, और आर कंप्लीट है, आर से कंप्लीट। तो इस थ्योरम को हम जनरलाइज करेंगे। हम थ्योरम ऐसे करेंगे कि अगर आपके पास गिवन कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगा और वाई इसका सबसेट होगा, जैसे यहाँ पर है आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस xt and let's take its subset y, any subset, and we say that this y is complete if it's closed। अगर ये y closed होगा उस केस में complete होगा। But not only this, we will also prove that its converse also true। converse मतलब क्या, अगर ये complete होगा then it's closed, तो अगर closed होगा then it's complete, and अगर complete होगा then it's closed subset। So that's the next theorem। So let X be a complete matrix space. Let X be a complete matrix space and Y be a subspace of X, and let Y be a subspace of X, subspace of X, then Y is complete, क्योंकि subspace means matrix space, then it's complete as a subspace, okay। Then Y is complete if and only if Y is closed as a subset, Y is closed subset of X। Proof। So let's first assume that Y is complete as a subspace of X. Assume that Y is complete, or Y is a complete matrix space as a subspace of X, or Y is complete as a subspace of X. Y is complete as a subspace of X. Y is complete as a subspace of X. Okay, so we show that this Y is closed. We show that Y is closed। क्लोजर का मतलब क्या है, हम प्रूव करेंगे इसका जो भी लिमिट पॉइंट होगा वो इसी का होगा, वो इसी में होगा। So let's take any limit point of Y। Let's take any limit point of Y। Let Y be a limit point। Limit point of Y। ओके, हमें प्रूव करना है कि y में है ना, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि y क्लोज्ड है, और क्योंकि y कंप्लीट है, इट्स गिवन, इट्स अ कंप्लीट सबस्पेस ऑफ x, उसका हमने यूज करना है। So for this let's take a sphere S1 by n, center direct y। Let's take this sequence
obviously this sequence intersects with this sphere. Okay, so for each n, for each n, the sphere with radius 1 over n and center y, ये जो sphere होगा. अब y किसका लिमिट पॉइंट है? y का लिमिट पॉइंट है. तो हर कोई स्फीयर जो होगा वो y के साथ इंटरसेक्ट करेगा. तो ये जो स्फीयर होगा, जैसे अगर आप n का वैल्यू 1 दोगे, से इफ यू टेक n इक्वल टू 1 देन द स्फीयर इज s1y. तो ये वो जो स्फीयर, जैसे n का वैल्यू 1 होगा आपके पास ये स्फीयर होगा. ओके, अगर n का वैल्यू 2 आप दोगे आपके पास ये स्फीयर होगा. तो इसको आप क्लियर कीजिए. अगर n का वैल्यू आप 3 दोगे इसका ये स्फीयर आपके पास होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो जो भी स्फीयर, क्योंकि y लिमिट पॉइंट है y का, जो भी स्फीयर होगा वो y के साथ इंटरसेक्ट करेगा. मतलब वो स्फीयर y का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे y को छोड़कर. So let's denote for the sphere S1, let's denote that point of intersection by y1. See, y1 ऐसा पॉइंट है y का जो कि इस स्फीयर में भी है. ठीक है. For this sphere S1 over 2, let's take the point y2. For this sphere, let's take the point y3. क्योंकि हर कोई स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है y के साथ. तो let's choose these points. Let's choose these points. Okay. Please, 1 minute. Let me first erase this. So then this intersects with what? With y. And let's choose yn belongs to the intersection S sphere and y. Then distance between yn and y, obviously it's less than 1 over n for all n greater than or equal to 1. So this means distance between y and y that approach to 0 as n approaches to infinity, because whenever n is approaching to infinity this will be less or equal to 0, but it can't be less than 0, it is equal to 0 as n is approaching to infinity. So it means that this sequence, ये जो sequence yn है, it's a Cauchy sequence, because I don't know whether this y is in y or it's not in y, but it is in x, क्योंकि आप x के बाहर तो नहीं जा सकते हो. This y is always in x. Okay, so that means this sequence yn जो आपने यहाँ पर लिए, it's a convergent sequence in x. अगर हम ये देखेंगे, it's convergent sequence in x, which means that yn is a convergent sequence in x. So that means it's a Cauchy that here. This means yn is a Cauchy sequence in x. So this means Cauchy in y, because these are actually the points of y, which means that yn is a Cauchy sequence. Is a Cauchy sequence in y. Is it clear? So this is a Cauchy sequence in y, but this y, it's given to be a complete subspace of x, so this must converge in y. मगर आपने ऊपर देख लिया कि ये कन्वर्ज तो y पर कर रहा है एक्चुअली, और लिमिट यूनिक होता है. ये y में कन्वर्ज करेगा, y में किसी पॉइंट पर ही कन्वर्ज करेगा, मगर ऑलरेडी ये इस पॉइंट y पर कन्वर्ज कर रहा है. सो दैट मीन इट मस्ट कन्वर्ज टू y only, because the limit of the sequence is unique. So that y जहाँ पर ये ऑलरेडी कन्वर्ज कर, वो y का ही पॉइंट होना चाहिए. So this means y belongs to y. अगर आप रीजन लिखोगे, because limit is unique, बस that's only reason, because limit is unique and this y is complete actually. वो तो ऊपर आपने लिख दिया. Sorry, let me add one more line here. This is Cauchy हमने इसके बाद कन्वर्ज लिखना है ना. This is so that means yn is a convergent sequence in
y. So this means y belongs to y as y converges to y and limit is unique. Okay, so y आपने y का लिमिट पॉइंट लिया था, ये y में आ गया, दैट मीन्स y is closed. y is closed. So इसका जो कन्वर्स है दैट्स होम असाइनमेंट. कन्वर्स इसका वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप देख लेना इसका कन्वर्स. दैट्स वेरी सिंपल. मैंने इस पर आप इसको देख लिया एट पेज नंबर 73. इट्स वेरी सिंपल. Okay, so let's now discuss continuous mappings. Okay, continuous mappings between the matrix spaces. उससे पहले कुछ assignments आपके लिए. The first assignment is first exercise. You can write let x be a matrix space and we have two sequences in x, say xn and yn. Let x be a matrix space and xn comma yn be sequences in x such that this xn it converges to x, yn converges to y. Suppose they are convergent sequences and yn converges to y. Then show that distance between xn and yn, so actually distance function is continuous. That's what it means actually. This converges to distance between x and y. So convergence means you have to apply that epsilon definition actually. तो वहाँ से आप इसको दीजिए. ये ऐसा नहीं कि आप x because x converges to x, y converges so this distance. So that's not true. That's not the way to do it. You have to apply the epsilon definition actually. Yeah? So for each epsilon first you have to find n size the mod of the distance between, because they are actually real numbers. It's not real sequence. Okay. So you have to prove that mod of d of x and y minus t of x. So this is less than epsilon for all n greater or equal to n. वो आपको प्रूव करना है और इसका यूज़ ऑब्वियसली आपको करना है बिकॉज एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेस टू वाई. इसका यूज़ करके आप देखिए और देन यू चूज द मैक्सिमम ऑफ दोज एन है, क्योंकि इस कन्वर्जेंस के लिए से n1 x होगा, इसके लिए से n2 x होगा. सो यू चूज द n एज द मैक्सिमम, देन फॉर दैट वैल्यू ऑफ n, सो दैट कंडीशन विल होल्ड द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस एक्चुअली. So that you will see that's not too hard. Now our next topic is the continuous mappings. The continuous mappings. Okay. Continuous mappings. हाँ CR you take the care of attendance है. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट फिर मुझे वो व्हाट्सएप कर देना है. ठीक है सर. Okay, continuous mapping. Suppose what's continuous mapping on a real line that you know continuous mapping. तो यहाँ पर एक्चुअली वो जो मॉड है ना, मॉड को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स से. So मैं इसको रिकॉल करूँगा द continuous mapping on real line. So suppose we have a subset obviously that has an interior point. So interior point पर ही हम continuity को actually check करते हैं. मैं real to real ही लूँगा. Okay. So that's this if f is a function from R to R. Okay. And
we have some point, say x naught belongs to R. Then we say this f is continuous at x naught. Then f is continuous at x naught, at this point x naught. Okay, if for each epsilon positive